हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का 4.3 द बीज। इस चैप्टर के वार्मिंग अप इंग्लिश वर्कअप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से मैच द प्रोफेशंस विद फील्ड ऑफ वर्क। चीफ मिनिस्टर, आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट, लॉ, सोल्जर, डिफेंस, ट्रेडर्स, बिजनेस, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और टीचर, एजुकेशन। सेकेंड है living creatures, birds, animals, insect, etc. are often used in as comparisons because some special characteristics they hold. Filling in the gaps using word from the brackets to make appropriate comparison. टॉल क्वाइट हम्बल मेरी तो हमें यहाँ पर यूज करनी है। मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। चाहो तो मैं अपना कर्सर हटा लेता हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू हनी बीज टीच अस। आंसर द honey bees teach us the art of the organization and living in order. Next, where does the emperor bee sit and what does he do? Answer the emperor bee sits in the tent and supervise the building of the bees hive. Next, what do roofs of gold refer to? Answer roof of gold refer to the structure of the golden bee hive. इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट है honey bees live in organized line like human beings. Discuss whatever of the following honeybees do as the poem. Write it down in your own word in your notebook. तो हम एक एक लिखेंगे कि emperor bee supervise the first building of the beehive. Second, bee magistrate bees do corrective works. Third, merchant bees go out to trade for nectar. D. Soldier bees loot nectar from flowers and protect the hives. E. Mason bees build the hive. M. Civilian bees make honey from nectar. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन। तो यहाँ पर उसका आंसर मैं डायरेक्ट देता हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर सब आंसर आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे। A. Complete the phrase using word from the poem. तो यहाँ पर फ्रेज आपको दिए हुए हैं। सेकंड देखते हैं फाइंड एनी टू अल्टरनेटिव्स लाइंस। अल्टरनेट लाइन कौन से है? द सिविल सिटीजन नीडिंग अप द हनी व्हिच pillage they will marry march being home. Second है pick out the lines that contain an onomatopoeic words. Answer the sad eyes just you with her slurry hum. C है pick out three lines that creates an image in your mind of is busy at work. Answer make wood upon the summer's velvet buds. Second, the sinking masons building roof of wood. Three, the civil citizen needing of the honey. Fourth question is refer to a good dictionary that carries phonetics transcription printed next to word. The word below are familiar to you. Copy their phonetics transcription from the dictionary and say them aloud to write. You may take your teacher's help if needed. तो स्टूडेंट ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट बी say the following words aloud and put the stress mark on the stress syllable. तो यहाँ पर उसका आंसर मैंने दिया हुआ है, जैसे कि क्रीचर्स, मीचानिक, डीली वीडिंग, बर्डन मतलब बर्डन, एक्सक्यूटर, मैजिस्ट्रेट। फिफ्थ है प्रोजेक्ट। क्या है? गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इंसेक्ट, ड्रॉ द इमेजेस और गेट पिक्चर on one sheet each. Fix the image, pictures and below it write the information. Compile the best page and makes a file of insect or prints. Insect, bees, primate, butterfly.
beetle, wasps or dragonfly. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.